Veteran actor Goofy Paintil, best known for playing the role of Shakuni Mama in B.R. Chopra's TV show Mahabharat in 1980, has passed away in Mumbai due to age-related health issues. He was 78 years old. The actor's family said in a statement, and I quote, "With profound grief, we announce the sad demise of our father, Mr. Goofy Paintil, as known as Shakuni Mama. He passed away peacefully this morning surrounded by family." Goofy's nephew Hiten Paintil also said, and I quote, "He passed away today around 9 a.m. He had a heart failure." Goofy Paintil had been unwell for a long time and was admitted to the hospital on May 31st after his health condition worsened. He was last seen in TV show Jai Kanhaiya Lal Ki. Goofy Paintil, also known as Sarabjit Singh Paintil, was an Indian actor and casting director. Initially trained as an engineer, he would go on to follow his younger brother, who had been trained at the Film and Television Institute of India, into acting. Arriving in Bombay in 1969, Goofy took up modeling, worked as an assistant director for movies, and acted in various movies and serials. He also directed his brother. His most well-known role is that of Shakuni Mama in the adaptation of Mahabharat by B.R. Chopra and his son Ravi Chopra, which Paintil himself recognized as his best role. He was so associated with his Shakuni Mama character in India that Paintil presented a political discussion show on the news channel Sahara Samay in the character of Shakuni. Besides being an actor, Goofy also directed a few TV shows and a movie titled Sri Chaitanya Mahaprabhu. With BR Films, he also worked as an associate director, casting director, and production designer. The actor was the brother of popular comedian Paintil, who starred in films like Satte Pe Satta, Rafu Chakkar, Parichay, and others. Some of Goofy's acting credits include film Dil Lagi, Des Pradesh, Deva, and Samrat and Company. He essayed the role of Akshay Kumar's maternal uncle in the 1994 movie Suhag. Besides Mahabharat, he also starred in TV shows like Bharat Ka Veer Putra, Maharana Pratap, Mrs. Kaushik Ki Panch Bahuein, among others. इन्होंने तो एक किरदार करके ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई, जो उनका एक मखसूस अंदाज था बात करने का, आंखें घुमाने का, बॉडी लैंग्वेज, तो किरदार जो है वो इतिहास हो गया है। वो कभी दर्शक उसे बुला नहीं पाएंगे। आप 400 फिल्में कर लें, आप 500 फिल्में कर लें और आप अपनी कोई जगह बना ना पाए, लेकिन एक किरदार करके एक इंसान 35 साल से ज़्यादा हो गए महाभारत को टेलीकास्ट में। आज भी बच्चे की ज़बान पे, दर्शकों की ज़बान पे शकुनी मामा का नाम, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो चले गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनका किया हुआ एक किरदार है, वो सारी ज़िंदगी ता क़यामत जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। समाचार आज मुझे मिला दोपहर को 10-11 बजे के आसपास मुझे पता चला। गोफी जी एक बहुत ही क्लोज़, हमारे ना सिर्फ मेरे को एक्टर रह चुके हैं बल्कि बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड भी बन गए थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और बीच में उनके बेटे हैरी से बात होती रहती थी, तो उसने बोला कि और भी जगह से पता चलता रहा कि वो रिकवर कर रहे हैं, शायद जल्द ही ठीक होने के आसार भी लग रहे थे। तो इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि चलो जल्दी से हॉस्पिटल से घर आएँ। और लेकिन आज सुबह एक बहुत ही शॉक लगा हम सबको। मेरी वाइफ जो कि उनकी बहू के बहुत करीब हैं, उनका बेटा और बहू दोनों हमारे, हम लोगों का घर में आना जाना बहुत है, तो बिलीव ही नहीं कर पाए हम लोग तो। और बस यही है, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। Subscribe to One India channel and never miss an update.